Hello there everyone. Today we are covering the C3 Aircross SUV by the French entrant Citroen. This is what it looks like. आइए एक देखते हैं इसका walk around along with a detailed view of the interiors. आइए फ्रंट ग्रिल से शुरू करते हैं। सिट्रोवन ने एक एग्रेसिव स्टांस देने की कोशिश की है एक बोल्ड फ्रंट के साथ। ग्रिल और फ्रंट बम्पर को बहुत ही सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है। टॉप मोस्ट सेक्शन में सिट्रोवन की इंपोजिंग शेवरॉन बैजिंग है जो कि क्रोम में है। लोगों के लेफ्ट और राइट से क्रोम मस्टैश लाइंस निकलते हैं जो DRLs तक रीच आउट करते हैं, जो कि अच्छा दिखता है। जो ब्लैक प्लास्टिक है वो ग्लॉसी पियानो ब्लैक फिनिश में है, बॉटम सेक्शन को छोड़कर, जहां पर राइटली मैट ब्लैक प्लास्टिक यूज किया गया है डस्ट के लिए। थ्रू आउट द फ्रंट ग्रिल 10 रेक्टेंगुलर सेक्शंस का यूज किया गया है, 5 नंबर प्लेट से ऊपर और 5 उससे नीचे, जो कि एक नीट जियोमेट्रिक और सिमेट्रिक डिजाइन देता है और इस कार को इसकी डिस्टिंक्टिव लुक भी। साइड पर आते हैं। टायर्स के ऊपर व्हील आर्च क्लैडिंग दे रखी है और साथ ही में बॉडी साइड सिल्क क्लैडिंग भी, ऑल इन मैट ब्लैक प्लास्टिक एज यूजुअल। डोर मोल्डिंग और पेंटेड इंसर्ट्स कंपनी के वाइब पैक में शामिल हैं जो कि ऑप्शनल हैं। कैरेक्टर लाइंस मिनिमल हैं जो कि क्लैडिंग के थोड़ा ऊपर डोर्स के लोअर सेक्शन में है। दिस इज एलिगेंट मिनिमलिज्म। ORVMs में भी ग्लॉसी ब्लैक पेंट यूज किया गया है और साइड इंडिकेटर्स भी इन्हीं में एम्बेडेड हैं। व्हील्स पर आते हैं। प्लस वेरिएंट में 17 इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं विद ग्रे हब कैप्स। टायर प्रोफाइल है 215 mm विद अ साइड रेशियो ऑफ 60। ग्राउंड क्लियरेंस इज 200 mm जो कि राइवल्स क्रेटा, ब्रेजा और सेल्टोस से ज्यादा है। रियर पर आते हैं। एक अच्छा SUV लाइक बॉक्सी लुक दिया गया है। बीच में सिट्रोवन का नेम और बोल्ड शेवरॉन लोगो बैजिंग है। रियर बम्पर ड्यूअल टोन में है, सैटिन सिल्वर एंड ब्लैक। कार स्टाइलिंग को डिस्टिंक्टिव बनाने के लिए ग्लॉसी ब्लैक टेल गेट एम्बेलिशर लगाया गया है जो लेफ्ट टू राइट रन करता है। टेल लैम्प्स 3D ज्यूवल इफेक्ट्स के साथ दिए गए हैं और कार के रियर से साइड बॉडी में एक्सटेंड होते हैं विच इज़ अ नाइस टच। रूफ रेल्स की प्लास्टिक क्वालिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है और ये सिर्फ एस्थेटिक्स का ही हिस्सा है और लोड बेयरिंग के लिए नहीं है। विंडोज डिसेंटली साइज्ड हैं और अंदर आपको स्टफी फील नहीं होगा। सीटिंग को सिट्रोवन इस गाड़ी का बिगेस्ट स्ट्रेंथ मान रहा है। दे कॉल इट द 5+2 फ्लेक्सी प्रो सीटिंग, जिसमें आप सीटिंग की 7 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। अंडर द हुड इंजन को फ्लोटिंग डिज़ाइन दिया गया है जिसका मतलब है कि इंजन के सभी पॉइंट्स जहां वो चैसी से कांटेक्ट में आता है उन्हें इंसुलेट किया गया है ताकि वाइब्रेशंस कार की बॉडी में कम से कम ट्रांसफर हों, जिससे आपको एक रूम लाइक एक्सपीरियंस मिले। Alright, let's get inside. First of all, starting with the door third, of course. Here is our door. I'm going to just shut it gently for you. So, there we go. I would say it's somewhere between a Creta, better than a Creta, slightly lighter than a Punto. So, the quality is somewhere there. And the best part is कि stoppage है. ये बहुत ज़रूरी फीचर होता है जब आप slants पर हैं, जब भी ग्रेविटी के साथ लीन हो रही है गाड़ी, एक जगह पर बना रहेगा जब आप थोड़े टिल्ट पर पार्क हैं। डोर की फिनिश पर आते हैं। आई हैव टू से द प्लास्टिक्स आर नॉट टू बैड, सो देयर यू गो। आई वुडंट से ज़्यादा हॉलो फीलिंग है। हॉलो फीलिंग इसलिए नहीं है क्योंकि गाड़ी की डैम्पिंग हो रखी है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। खासकर अकूस्टिक्स के लिए ये फीचर बहुत अच्छा रहता है। सो वेरी नाइस टेक्सचर्ड फिनिश इफ़ यू लुक एट इट क्लोजली। सेमी रबराइज्ड फील भी आता है, सो दैट्स वेरी वेरी गुड। ऐसा नहीं लगता कि एकदम स्टार्क प्लास्टिक होगा, सो दैट्स अ गुड फीचर। नीचे देखिएगा, सो ये डार्क ग्रे में आपने देखा, सो देयर इज़ अ वेरी गुड टच ओवर हियर। ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, दिस इज पैडेड, इट्स अ लिटिल फोमी, दैट्स वेरी नाइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस इज लाइट grey, this is dark grey, so ये contrast में बनाया गया है। There's a nice little cubby hole over here for storage. You can have your parking tickets, small little knickknacks and so on, and here are the power window levers. उससे नीचे आएंगे, ये बहुत प्यारा फीचर लगा मुझे। There is an insert of a glossy piano black finish, which is a very very nice touch. अगर पीछे से थोड़ा देखें तो overall बहुत अच्छा आउटलुक आता है। Dark grey, grey and piano black, so all palettes of gray and black of course, and over here very very light gray inserts of the cubby hole. This is a very very wide bottle holder I would say. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 1 लीटर की ही बॉटल आए। अगर आप थोड़ा सा पीछे से देखेंगे you will realize कि इसमें आप एक thicker zipper bottle भी डाल सकते हैं। Then finally we come to the left. Over here is your grill, the speaker grill over here. So that's about the door. Let's go inside. The look of the dashboard in entirety from left to right. Hopefully this gives you an idea of the placement of things and the plastics and everything. Alright, let's start with the dashboard. So over here, सबसे पहले देखेंगे यहाँ heads up display. I would say very nice graphics, very very colorful, and it is more high res than usual और बहुत अच्छी spacing है. This is entirely 4 inches over here, so 4 inches का ये सारा heads up display है. And over here there's a digital speedometer in the center. इस समय I think there you go. You can see the 0 over there. So all the indicators are digital. यहाँ analog का कोई काम नहीं है. So it looks like a very modern car from over here. फिर इसके left पर आते हैं. Let's look at other electronics
here is a 10-inch infotainment system over here. Very, very nice. It's got touch screen, and the touch screen is pretty responsive, as you can see very easily. That's the radio sound going up and down. So controls are rather very, very comfortable. Yep, absolutely. The touch is very, very smooth. Android Auto. You can even use USB, or you can even pair it wirelessly over here. So I'm just gonna, yeah, all right, it goes away on its own. And here's our navigation. Of course, abhi phone connected nahi hai, but I have to say that the screen is very nicely placed. It's very level with the eyes of the driver and even the co-driver over there. So that's lovely. आइए पीछे को आते हैं. Over here you will see here are the vents. Talking about the visibility, pretty decent. The best part is आप आगे अगर थोड़ा ऊपर से देखेंगे, so you can actually see the end of the hood over there. गाड़ी के hood का end दिखता है, which helps in very, very good judgment of the car. और उसके बाद पीछे आते हैं. You've got 2 airbags in this car. One is over here in the steering, and the other one to the left for the other passenger over here. So these are the 2 airbags available. Looking at the steering, again very, very modern, because you've got all the steering mounted controls over here. There's the menu button and everything, and there you go. Heads up display में बहुत अच्छा display आता है. So if I press menu from here, and I think I have the toggle options like this. This is all happening from the screen, so it's very, very comfortable for the driver. किसी और पर rely नहीं करना पड़ता. And on the right side, you've got the mounted controls for your phone and so on. So the source of the music as well as the phone controls over here are very nicely placed. उसके बाद आते हैं हम about the quality of the plastics. Yeah. So I have the steering in my hand right now, very firm. The feeling is very, very solid. I would say it's tough over here. As you can see, even if I punch it a little, you get a very dull note over here, which shows that it is rather solid. Rubberized feeling hai, so there won't be any slipperiness, I'm hoping, when your hands are a little moist in the summer. And then the build quality, not too bad. Yeah, there is no hollow sound whatsoever. Feels rather solid. Finish अच्छा है. Again, textured finish है. बीच में बहुत अच्छा chrome में आपका Citroen का logo है. It's a very sporty steering. It's like it's a 3-spoke steering, as you can see, 1, 2 and 3. और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नीचे एक silver accent insert किया गया है. And then let's come to the entire dashboard. कि इसकी finish देखते हैं कैसी है. Over here you've got dark grey plastic. यहाँ पर आप जो दूसरा देखेंगे, this is like a dull goldenish shade. Then you have a nice silver insert over here. और उसके बाद नीचे आप जो देखें, जो entire larger lower portion है left to right of the dashboard, this is in light grey finish. फिर यहाँ control panel पर आते हैं for the AC and all. Although this is not the top model, फिर भी अच्छी finish है. So these are the dials. That's for the heater, that's for the AC, that's for the direction of the fan. So very good. Although all plasticky, I would say. और ये भी जो inserts नहीं है यहाँ पर, these are not chrome inserts. ये है plastic ही है जिसे सिल्वर पेंट किया गया है, बट स्टिल नॉट टू बैड. वेरी ergonomic. मुझे यहाँ से हैंड रीच करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आ रही है. गियर लेवर पर आते हैं. वेरी गुड न्यूज़ ओवर हियर. वी गॉट 6 gears over here, so that's fantastic. 6 gears. And then these are the rear window levers. और अच्छी बात है उसके पीछे भी आप देखेंगे तो storage है. So there is ample storage. Let me count the number of cubby holders over here. 1, then we've got 2, then there's the bottle storage 3, then there's 4 over here, and then there is 5 over here. Fantastic. That's very, very good storage. Ironically enough, जो इसका glove compartment है over here, so that is limited only to documents. Nothing fat, nothing thick. I think वो थोड़ा obstruct करेगा इसे lock होने में. But still, I would say the space is commendable. और थोड़ी quality यहाँ से भी feel हो रही है. This is a very, very heavy shutter. I mean, you can feel layers of plastic in here. Not light at all. I'll just let it fall with gravity और आप देखेंगे कि कैसा feel होता है. There you go. That's a very solid thud. There you go. And shut. Done. And then अगर center console की बात करें, around the infotainment, this is all very nice glossy piano black finish. In fact, जो infotainment का frame है वो भी सारा piano black finish में है. So it's all glossy all the way, nothing dull, keeps things exciting. And what I really love is the air vents, dear friends. They are multi-directional, as you can see. बहुत अच्छा material use हुआ है. I have to say this is all glossy plastic, doesn't feel cheap at all. And the best part is कि front में जो भी सभी की front से dull chrome finish दे रखी है, there are chrome accents which really accentuates the look of each vent. So these are the vents right in front. In the center console, आइए left वाला vent देखते हैं, which is
vertical in appearance. Again, this moves this way, and you can even change the direction like this. And again, the same chrome inserts which are lovely. और हर एक में frame again piano black finish में दिया गया है, which is wonderful feature I feel. So USB sockets बहुत liberally दे रखे हैं. There's not 1, 2, there are 5 USB sockets in this car. ये आप देख रहे हैं middle row में there are 2. Last row में भी 2 sockets दे रखे हैं. और अगर आप यहाँ वापस front पर आते हैं तो of course for the front passengers, I'm afraid there is only 1 over here. I wish यहाँ पर 2 दिए होते तो ज़्यादा अच्छा रहता, because usually सारी जो charging and all होती है वो front row पे ही होती है mostly. But anyway, I mean, it's a democratic car. There's something for everybody. So 1 over here, 2 in the middle row, and another 2 in the final row. Coming to the audio, there are 4 speakers in this. So एक यहाँ पर लगा है. As you can see, there are 2. One on the driver's seat, one on the opposite seat over there. और जो middle row है, पीछे भी आपको 2 speakers मिलते हैं. At the bottom of each of the doors. A pillars हैं, उसी में ही tweeters आप देख रहे हैं embed करे गए हैं. One is on the left and the other of course by the driving side. So you know, they don't want you to miss out on the energizing treble at all. आइए पीछे देखते हैं. दिस इज़ अ फैंटास्टिक फीचर डियर फ्रेंड. सेंटर में आप देख रहे हैं. सो मोस्टली जो आपको हैंड ब्रेक के पास थर्ड वेंट मिलता है एसी का, यहाँ पर सिट्रोएन ने वो आपको सेंटर में दिया है. सो दैट्स वेरी इवन कूलिंग फॉर द एंटायर कैबिन डियर फ्रेंड्स. एज यू नो, हॉट एयर राइजेस एंड कोल्ड एयर ड्रॉप्स. सो दैट्स अ वेरी गुड साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो दैट इट वेरी इवनली cools the 3rd, 4th and 5th and 6th passengers at the back. So in fact, yeah, there's going to be a 7th in the middle too. So पीछे के passengers के लिए एक fantastic cooling feature है. Now coming to the comfort, starting with the seat. So the good part is, चाहे आप इसका base model लें या top model लें, ये देखिए बहुत प्यारा fabric finish है, which is again two-tone. This is lovely fabric over here, textured as you can see. This is black over here and this is grey over here. Very nice contrast. And I have to say कि इसका जो lumbar support है, the spine support, that is also very elegant, because the best part is कि usually seats में curvature होता है, यहाँ पर curvature नहीं है. If I look at the back, it's very solid foam, it's straight foam dear friend, which is a very good feature. आपको ऐसा नहीं लगेगा. जो center of the back में जो lack of support लगता है because of the curvature, क्योंकि height यहाँ पर अच्छी है, so उसकी वजह से यहाँ पर बैक को lumbar support बहुत अच्छा है. अंडर थाई सपोर्ट की बात करते हैं. द सीट्स आर ऑलमोस्ट रीचिंग माई नीज, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अंडर थाई सपोर्ट में कोई कमी है. जस्ट हैंड्स विड्थ इज़ व्हाट इज़ लैकिंग ओवर हियर, एंड आई थिंक इससे आगे अगर जाते भी तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में मुश्किल आती. सो या इट्स वेरी वेरी नाइस, एंड या आई मीन 4 out of 5 easily for under thigh support. Then of course there's the height adjustability feature. You can manually adjust the height. I think in the top model you can do it automatically, and that's a very good feature. यहाँ पर of course ये manual है, and of course you can adjust the back of the seat as well. Very common feature. Coming to the pedals over here, if I press the clutch, very very soft, I have to say, amongst the more gentle clutches that I have used. So very nice, neither too firm nor too light, just the way you want it to be. Brake of course we're in off position, so I can't tell you, but yeah, accelerator is a breeze to press, very very comfortable. Coming to the all important when it comes to comfort, that is the leg room. So I am almost 5'11" over here, and I have to say I'm very comfortably seated. आप देख सकते हैं कि my knees are far apart from the plastics of the dashboard. बहुत room है यहाँ पर. I would say there are easily, I mean 10 to 11 inches between me and the plastics, the end of it, and still उसके बावजूद भी इतना roomy होने के बाद अगर आप पीछे नज़र डालें, so you will find कि एक somebody around 5'10", 5'11" can again fit in the back, if not 6 feet. If I adjust it a little, let's have a look. I'm still very comfortable, and you can have more room in the back. So leg room, not bad at all. Coming to the gear knob, ये जो इतना ज़्यादा इन्होंने room दिया है, आप चाहे इसे ऐसे ऑपरेट करें, चाहे हाथ को ऊपर रखें, तो surface area is more than a regular gear knob. If I talk about the length of the gear knob, it is, I would say, 20% more than your standard cars. So here goes. It's a very very smooth shift, and the gear distance, the travel distance is very very little. So I'm hopping into the middle row. So this is a 60-40 split. This is your 60, that's your 40. You can even fold them.
and of course you will have to fold them, otherwise the people behind will not be able to enter. So comfort के लिए आप जो 40 split वाली chair है उसे fold कर सकते हैं. And the best part is these are theater comfort seats, which is to say they are recliners. Yes, that they can recline behind, so you can relax your spine a little more. Let me step in and you will get an idea of the legroom. This is fabulous, I would say. Again, I have no contact. My knees have no contact with the back of the front chair, which is again a very good sign of excellent legroom. जो गाड़ी की लेंथ है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करी गई है. एंड द बेस्ट पार्ट इज जो 60-40 स्प्लिट है, जो सेंटर का पैसेंजर है उसे ये रिफ्ट ज़्यादा फील नहीं होगा. लेट मी ट्राई टू मूव हियर. इफ आई सिट इन द सेंटर विद माई फीट to the left and the right of the gear console, there is enough room on my right so that the third passenger can be here without any encroachment, and I can also be seated just at the edge of the seat belt levers clips over here. And then the other person जिसको ये नवाबी सीट मिलेगी वो अलग से ये recliner enjoy कर सकते हैं. As you can see, no encroachment. My arm is well within the division line, and the third person can very comfortably sit over here. And we're going into the final row. Follow me. Here we go. So as you see, this seat has been folded for the ingress. अंदर जाते हैं. Okay, not hard. Since the roof is high, that's a very good feature. And I own a Force Gurkha जिसकी roof की height तो truck वाली है, and still I would say that this is a very comfortable height. Doesn't feel claustrophobic. थोड़ा सा slant है पीछे को आते हुए. That's of course the aerodynamics. And wow, पीछे से मुझे एक और बहुत प्यारा feature देखा है जो मैंने आपको air vent दिखाया था on the roof. उसके controls पीछे के passenger के लिए भी हैं with the knob over there, as you can see by the cabin lamp. So another very nice touch. Coming back to the comfort, so these seats in the back are a 50-50 split. This is 50%, this is 50%. Unfortunately, dear friends, इसमें आपको boot space के लिए आप इसे remove नहीं कर सकते इन seats को. You'll just have to fold them to get an approximate space of 240 liters is what they tell me. So yeah, but still I would say कि legroom ठीक है, legroom is just enough. यहाँ पर मैं कहूँगा थोड़ा सा cramped feeling ज़रूर है. If it's a long ride, it may not be that comfortable for adults, but the children should be very comfortable over here. My thigh or my knee is at the verge of touching the seat over here, but still थोड़ा सा भी अगर recline हुआ तो problematic हो सकता है. So the reclining feature will only work best if and only if there is nobody who's tall sitting behind that. So that's one. Moving on to the second seat over here, again good comfort. अंदर आइए, आपको एक छोटी सी बड़ी अच्छी detail दिखाता हूँ, which is that there are USBs over here. यहाँ पर भी पीछे वालों को इग्नोर नहीं करा गया है. 2 USBs यहाँ पर चार्जिंग के लिए दे रखे हैं. One is of course in the dashboard and the other 2 are over here. And this will give you an idea of the space in the last row. So like I shared, not too much, not too less. And the best part is आप साइड में देख रहे हैं mirrors, glasses लगे हैं to let the light in ताकि claustrophobic ना feel हो. So that's a nice touch. These skylight-like features are on both the sides. And of course, अगर बाहर से भी आप देखेंगे इन इस feature को तो ये बड़ी अच्छी ही एक elegant styling देता है गाड़ी को. Now let's come to the boot space with the rear seats folded. I have to say this is impressive over here. Very nice door again, heavy. And there you go, dear friends. Your rear seats are folded and this gives you a total of, as Citroen says, 444 liters of space, which I would say is rather impressive. और यहाँ पर the best part is क्योंकि height अच्छी है roof की, you can have your cabin bags standing or you can even have them flat. वो totally आपकी मर्जी है. So yeah, this is a lot of room, even if I talk about its width left to right or its length all the way over there. Very good handy storage, and look at that, the utilization of space. You have cubby holes over there too for these passengers at the back. So like I said कि USB ports दिए गए हैं, cubby holes दिए गए हैं, पीछे वालों को disappoint या ignore नहीं किया गया है. And then over here end में भी आप देखेंगे length का, like I said, बहुत अच्छा utilization है. This is the space for your jack, for your toolkit, and so on and on. And finally, a very nice touch over here. There's a little light over here as well for night operation, which I think is necessary. दूसरी side भी होती तो बहुत अच्छा रहता, but I'm afraid that's not the case. Still, a decent job done. Here are the keys. थोड़ा सा cost cutting मैं यहाँ कहूँगा, थोड़े से cut corners हुए हैं यहाँ पर because, but the logo, the branding is there. That's a very nice touch, so that people can know you're driving a Citroen. But yeah, the plastics could have been heavier. They don't feel very solid in the hand. But anyway, that's how it is. एक indication light यहाँ पर है. This is for the unlocking and that's for the locking. But the nice touch is that they have a very nice click over here. If you look at the OVRM over here, यहाँ पर indicate होगा when I open it.
And when I close it, so that's about the keys. So that's that. Hope you liked the review. We will be back very soon with a drive of the same car too. Until then, do check it out at the showrooms. It's available now, and even it's on the road. Many customers have bought it. Abhi tak unka review lena baki hai, how they felt. So I'll be driving it very soon, and we'll get back to you with the same. Thanks so much for watching. Have a lovely day.